minus 2ax. So what was the first? First was, if the speed of the object is increasing, then S v equal u plus at, S equal ut plus half at square, v square equal u square plus 2as. And if the velocity of the object is decreasing, then v equal u minus at, S equal ut minus half at square, v square equal u square minus 2as. These are the two cases if the velocity of the object is increasing and if the velocity of the object is decreasing. Now, case third. Case third, if the velocity of object increasing and starts from rest. Suppose that the object is initially at zero velocity and after some time the velocity of the object is increases. Since if the velocity where object is at rest initially, so u will be zero here. At rest for rest position, u is zero. So u will put in all these equations, u equals zero. So this is the first one will become, यहाँ पे लिख देंगे at rest v equal 80. Second, s equal half at square, and third v square equal 2a, because third, अगर रेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है तो u will be 0, so v equal 0 plus 80, that is v equal 80. S equal 0 into t, that is 0, so s equal half 80 square. U equal 0, so v square equal 0 plus 2s, that is v square equal 2as. Now what is the case? Fourth case, finally object stopped. ठीक है बेटा? अब here you have seen two cases. The first one was if the velocity of the object is increasing, there is plus sign. If the velocity of the object is decreasing, there is minus sign. If the object starts from rest, then u is 0. Now what is the fourth case? In fourth case, if the object finally stopped. Finally stopped means the final velocity of the object is 0. क्योंकि suppose that the someone is moving with a certain velocity and after some time at some year he had stopped. Then the final velocity of the object is 0 because he is stopped at that point. But what will you see here? Since the final velocity has stopped, it means there was a retardation. So you will use the second case, that is v equal u minus a, and it will put there v equal 0. क्योंकि पहले इनिशियल वेलोसिटी से बढ़ रहा था, फाइनली कहीं पे जाकर के रुक गया है. जब रुका है तो इसकी वेलोसिटी घटी है, 0 हुआ है. इसका मतलब रिटार्डेशन के केस में v इक्वल 0 आप. ठीक है? तो इन दैट केस देखो, first equation v equal u minus at, and you will put here 0 because finally the object has stopped. So if the object has stopped, so this
is 0, u minus 80, so this is equal to u equal 80. This is the equation, and in this case there is no change because the final velocity is not given here. Yes, Aditya. Good. Well, and this one is the third case. V square equal u square minus 2as. This is the third equation. But and you will put here v equal 0 because the object has started. Stopped finally. So the final velocity is 0. So 0 equal u square minus 2as. So 2as equal u square. This one is the case if the object has finally stopped. Clear? One thing was also in the second part आपको एक बताना भूल गया था. खैर वो आपको नेक्स्ट केस में स्टडी करेंगे. देखो बेटा, so here I have discussed you 6 cases. First one, if the object is velocity of the object is increasing, if the velocity of the object is decreasing. Third case, object starts from rest. Fourth, object finally stop. Fourth cases I have discussed you. Now, there are two cases here also. If the velocity of the object is under gravity, gravity की अगर बात करें, under gravity means if you are throwing object upward or the object is falling downward. In that case, these equations of motion is known as motion under equation of motion under gravity. So you know the first equation is V equal U plus AT. The second is S equal UT plus half AT square, and third is V square equal U square plus 2AS. These are the three equations of motion, and these are from linear equation of motion. It's called linear equation of motion. And if the object is falling from a certain height, or we are throwing an object in upward direction opposite to the gravity, then these equations we consider are known as a equation of motion and gravity. Then what we change here in the equation? This equation V equal U plus will change into V equal U plus GT. Janvi Tiwari, are you saying something? Because just your name is coming here, your message has not displaced. Minus Janvi Tiwari, just I am अभी बेटा माइनस नहीं, अभी माइनस नहीं, अभी माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? If the object is moving under gravity की बात कर रहे हैं, then this equation will change V equal U plus GT, and S देखो ये S will convert into height. S जो है height में convert हो जाएगा. H equal UT plus half GT square means S जो है H में कन्वर्ट होगा और A G में कन्वर्ट हो जाएगा. V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2G और S कन्वर्ट हो गया H. तो दिस इक्वेशन यहाँ भी हम स्मॉल h ही कंसीडर कर ले रहे हैं. देखो S has converted into H and A is converted into H. So these are the three type of motions when 2gh not gh, this is 2gh, 2gh, third is v square equal u square plus 2gh. बेटा ये केसेस अंडर ग्रेविटी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे हाउ इट कैन बी applied in the numerical problem. Suppose that you have thrown an object. पहले यहाँ से दिखाते हैं. This is the position of the object at a certain height. This is the height of the object from the earth surface. This is the surface. ठीक है? देखो ये अर्थ सरफेस है
और इस अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? h है। And suppose that object is falling here, object is falling under gravity, यहां से नीचे गिर रहा है। Clear? So if object is under falling, then you will see the velocity of the object will increase, and in that case, these equation will apply. But if the object is falling at rest, यहाँ भी दो केसेस है बेटा। एक तो falling under gravity means he is already in motion and he is falling, or that is falling. कोई ऐसा ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि वो अंदर स्पेस में या किसी एट ए हाइट पे मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, और वो फिर जो है टुवर्ड्स अर्थ की तरफ मूव कर रहा है। इन दैट केस v equal u plus gt, h equal ut plus half gt square, v square equal u square plus 2gh। but if फ्रॉम रेस्ट की बात करें, फ्रॉम रेस्ट if object is falling from rest, in that case u is 0, in that case u is 0, because जब भी आप रेस्ट की बात करोगे तो initial velocity will be 0, and if the initial velocity is 0, so this equation will become v equal only gt। देखो u is 0, so this is v equal gt, and this is most important part कि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है कि द फ्रॉम रेस्ट, ऐसे भी पूछ सकता है कि एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन under gravity, then find the velocity of that object in 2 seconds, 4 seconds, 5 seconds, कोई भी टाइम में पर्टिकुलर पूछ रहा है तो just put the value of g equal 9.8 and then multiply by t, you will get the direct velocity of that object in that particular time, because in the question it is given the object is falling from rest। And here also that there will be a great change here। देखो यहाँ पे if it is falling from this, then u is 0, so this is only h equal half g t square। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आपके क्वेश्चंस में, कंपटीशंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि h equal half g t square, u is initially 0, so h equal half gt square is the second equation of motion under gravity if the object is falling from rest position। अब यहाँ से क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलता है वो आप देखोगे। देखो just do the multiply of 2 in the right hand side, you will get 2h equal gt square, 2h equal g t square, or 2h upon g equal t square। देखो g को इधर डिवाइड कर देंगे, आपको मिलेगा 2h upon g equal t square, और फ्रॉम दिस, ठीक है, t equal अंडर रूट 2h upon g। यहाँ से just you can find the time of that object from a particular point। आपसे पूछ रहा है ना कि अगर किसी हाइट से अगर कितना टाइम लगेगा अगर अंडर ग्रेविटी में फॉल हो रहा है तो रेस्ट में, तो आप उसकी हाइट निकाल सकते, उसका टाइम निकाल सकते हो कि इतने हाइट से अगर फॉल हो रहा है तो इतना टाइम लगेगा अर्थ सरफेस तक पहुंचने में। या अगर आपको हाइट टाइम दिया है तो कितनी हाइट पे है वो आप निकाल सकते हो। दूसरा केस, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट केस है वो क्या है वो आपको दिखाते हैं। सपोज दैट हियर h इक्वल हाफ gt स्क्वायर इज गिवन। देखो बेटा ये इक्वेशन है जब ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, then h equal half gt square, the result has come here। Now if I ask, there are two objects, one is of 5 kilogram and the second one is 10 kilogram,
which object will reach first at the earth surface, then what will be your answer? One is of 5 kilogram and one is of 10 kilogram. Which object will reach first on the ground, on the earth surface? What will be your answer? Reply students, anyone? गुड। तो इसीलिए हमने आपको बताया कि हियर इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये कंपटीशन में भी आपसे पूछता है। देखो, द टाइम हियर इट इज नॉट, मतलब देयर इज नो मास इन दिस इक्वेशन, so whatever be the mass of the object, there is no matter of mass here. The time does not depend upon the mass, so the both objects will fall in the same time on the surface of the earth. So if there are two objects at a different height, suppose that one is at height h1 and then it takes time t1, t1 ये कोई ऑब्जेक्ट है जो h1 हाइट पे है, t1 टाइम टेकिंग करता है अर्थ सरफेस पे आने के लिए, और the second object is at the height h2 which takes time t 2 square, then what the result you will get here? Consider this as a 1 and this as a 2. Divide these two h1 upon h2. If you are dividing, then 1 by 2g, 1 by 2g cancel out. Then this one will become only t1 square upon t2 square. And if you will remove a square here, then there is, बेटा पहले have a look and make a note। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करो जल्दी करो फटाफट, क्योंकि आपके पास 5 मिनट का टाइम है। टू फास्ट, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो, जैसे भी करो। ठीक है, डन, ओके। नाउ कम टू द टॉपिक पॉइंट। Here h1 upon h2, h1 upon h2 equal t1 square upon t2 square. Here both are in the square form, so t1 upon t2, अगर आप इसको स्क्वायर हटाओगे तो ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा, and this is equal to under root h1 upon h2. This is the interesting result. This is the interesting result in for your numerical problems. Suppose that the question comes like this: there are two objects at different height. Then find the time taken, find the ratio of time taken to reach the ground. Suppose that I am asking a question from you. There are two objects. One is at a height. One is at a height 25 meter, and the second one is height at 49 meter. Then what will be the time ratio of the time taken of both the objects reaching to the ground? बोलो बेटा, there are two objects at height 25 and 49 and both are falling from rest. Then what is the ratio of time taken to reach the ground? 5 races, because here is the h1 upon h2 in the square root, so just you will take t1 upon t2 equal under root 25 upon 49, so the 5 upon 7, this is equal to t1 ratio t2 equal 5 ratio 7. तो दिस इज द इंटरेस्टिंग रिजल्ट, और ये आपके क्वेश्चंस या कंपटीशंस के लिए भी अच्छा पार्ट होता है। तो अब देखो बेटा, एक और क्वेश्चन यहाँ एक केसेस आपको थर्ड इक्वेशन में दिखाते हैं। थर्ड इक्वेशन वाज b स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh। दिस इज द इक्वेशन अंडर ग्रेविटी if the object is falling towards the earth surface. If the object fall from rest, बार बार हम कह रहे हैं कि from rest, अगर सिर्फ कहते हैं कि falling towards the gravity, towards the earth, तो वहां पे हम u नहीं जीरो करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि it is not defined कि falling from rest,
But if it is saying ki it is falling from west, then you will directly put here u equal 0. So v square equal, this one is 0, 0 plus 2gh and v square equal 2gh आ जाएगा, v equal under root 2gh. This equation has come here, और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके सैटेलाइट जो प्लेनेट साइंस वहां पे इसको यूज करते हैं, एक तरह से एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में भी इसको यूज करते हैं। v इक्वल अंडर रूट 2gh, v इक्वल अंडर रूट 2gh। here h is the height, suppose that the object is moving, an object is moving at a certain height from the earth surface, then what will be the velocity of that object? Just put the height of that object and do the calculation, you will get the result. Clear? अब अगर आपसे क्वेश्चन आपसे करते हैं कि v इक्वल अंडर रूट की बात करें, h के जगह पे सपोज दैट हम आपको r e दे रहे हैं, ऐसे देखो बेटा, अगर हम आपको दे रहे हैं 2g r e, you know r e means what? r e means what? Who will tell me? Who will tell me r e means? Anyone? Anyone? What is the meaning of r e? Good. Radius of earth, e stands for earth, r means radius, radius of earth. So here radius of earth, we have converted, देखो ये cases है कि suppose that this is the center of the earth, this is the center of earth and object is at the earth surface, it is moving around the earth surface here, so this is the radius. अब यही अगर अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो h अगर कंसीडर करते हैं तो h इज इक्वल टू आर ई हमने लिया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डायग्राम क्लियर कर दे रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ से। देखो क्वेश्चन ये बेटा कि अगर दिस वन इज द अर्थ सरफेस and this is center of the radius earth and this is the height which is equal to radius of earth. Object is here on the earth surface moving around the earth. Then the formula is v equal under root 2g r e, which was the formula v equal under root 2gh. So in general, if you will replace this h into r e, then you will get the escape velocity of that object. What is the escape velocity of the that? And if you will put here r e, you will get 11.2 kilometer per second. मतलब एक 1 second में how much time, how much distance object will cover? 11.2 kilometer. And this is the escape velocity. Escape velocity means कि अगर ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड देते हैं तो वह अर्थ सरफेस को छोड़ करके अर्थ ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा, और अगर 11.2 से कम देते हैं तो वह अर्थ की ग्रेविटी को पार नहीं कर पाएगा। तो दिस वाज द यूज ऑफ दिस इक्वेशन इन द हियर v इक्वल अंडर रूट 2g। जी शायद आपका टाइम भी ओवर हो चुका है बेटा, we'll discuss later again, some cases are also here left, so we'll discuss in the next session. I hope you have learned something and have enjoyed the session. Okay ma'am?